Hello everyone, welcome back to Chemistry by Vish. I'm your teacher and educator Vishal Naik. So our today's topic of discussion, that is the stereoisomers. So how can we calculate the number of stereoisomers for different molecules? अगर किसी मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल अगर आइसोमर प्रेजेंट हो तो उसके नंबर ऑफ स्टेरियोइसोमर्स कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं ये आज हम पढ़ेंगे। मेरी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा बेसिक्स ऑफ द स्टेरियोकेमिस्ट्री एंड द नोमेनक्लेचर इन्वॉल्व इन स्टेरियोकेमिस्ट्री। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो सो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूं, वहां से आप वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। So in a chemistry, there are only two types of molecules are present. That is the constitutionally unsymmetrical molecule and constitutionally symmetrical molecule. We have to calculate the stereoisomers of those compounds only. Okay. So I have written the formulas and all type of compounds that we have to study to calculate the stereoisomer of those compounds. So one by one, we discuss those molecules by taking some examples. So first, that is a constitutionally unsymmetrical molecule. So what are those constitutionally unsymmetrical molecules? Suppose we take an example. So this is an example of constitutionally unsymmetrical molecule. So why this compound is called as constitutional unsymmetrical molecule? Because each chiral center has different constituent or different atoms. अगर हम ये chiral center देखेंगे, so it contains CHO group, H, OH and this whole group which contains CH2OH. And अगर हम ये chiral center देखेंगे, so it contains OH, H, CH2OH and this another group. Okay, so constituents are different. That's why this is called as constitutionally unsymmetrical molecule. तो चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। So what do you think? This molecule is constitutionally unsymmetrical molecule or symmetrical molecule? तो चलिए वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए दिस मॉलिक्यूल इज कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सो दिस मॉलिक्यूल इज एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बिकॉज दिस chiral center contain bromine, hydrogen, CH3 and this another group. Okay, and this chiral center contain OH, H, CH3 and this another group. So अगर टर्मिनल ग्रुप सिमिलर है लेकिन ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल ही है। Why? Because each chiral center has different groups. Okay, so how can we calculate the stereoisomers of those compounds? So total number of stereoisomers for constitutionally unsymmetrical molecule can be calculated by this formula, that is 2 raised to n, where n is optical or geometrical center. ये दोनों molecules optical isomers हैं. Okay, so चलिए calculate करते हैं one by one. So 2 raised to n. So in this case, this is an chiral center number 1 and this is an chiral center. So two chiral centers are present. So n is 2. So 2 raised to 2, that is 4. So total number of chiral centers आ गए 4. So ये chiral center आएगा R और S and ये भी आएगा R और S. अगर हम देखेंगे तो combinations क्या आएंगी? R, S, R, R, then S, R and SS. Okay, so 1, 2, 3, 4. So for this molecule there are total number of 4 isomers. So RS, RR, SR or SS. For this molecule we calculate, that is 2 raised to n. Again 2 chiral centers are present. Okay, so 2 raised to 2, that is again 4. सेम ही आएंगे RS, RR, SR और SS. इसकी कॉन्फ़िगरेशन वही होगी, इसकी R हो सकती है, R और S हो सकती है, इसकी भी R और S हो सकती है। For constitutionally unsymmetrical molecule, we use this formula, that is 2 raised to n. So ये हो गए ऑप्टिकल आइसोमर्स। चलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए भी देखते हैं। So for example, CH3, CH2, CH, double bond CH, single bond CH, double bond CH and CH3. So this is an example.
So this molecule is also constitutionally unsymmetrical molecule. अगर हम काउंट करेंगे, नंबर्स काउंट करेंगे, so 1 2 3 यहां से आएगा तो थर्ड नंबर डबल बॉन्ड है, यहां से आएगा तो सेकेंड है. So this one is also constitutionally unsymmetrical molecule. So to calculate the stereoisomers, we again use the same formula, that is 2 raised to n. Okay, so in this case n is nothing but geometrical centers. So this is one geometrical center and this one is also a geometrical center. Okay, so two geometrical centers are present, so n is equal to 2. So 2 raised to again 2 is equal to 4. So कौन से आएंगे? So ये आ सकता है EZ, ये भी आ सकता है EZ. अगर कॉम्बिनेशन देखेंगे so Z E कॉम्बिनेशन आ सकता है, E Z कॉम्बिनेशन आ सकता है, E कॉम्बिनेशन भी आ सकता है और Z कॉम्बिनेशन भी आ सकता है. So 1 2 3 4. So 4 isomers are present, or 4. So total number of isomers are 4 in this case. This formula is used to calculate the optical and geometrical isomers when they are constitutionally unsymmetrical molecules. Okay. अगला एग्जांपल देखते हैं. If a molecule contain both optical and geometrical center in a single compound, उसके लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं. तो चलिए एग्जांपल देखते हैं. So for example, so in this example, optical center is present and this one is a geometrical center. So if molecule is constitutionally unsymmetrical molecule which contain both optical as well as geometrical center, then also we use this formula, that is the total number of isomers are calculated by formula 2 raised to n. So 2 raised to n. So in this case n, that is the optical center, so एक optical center है यहाँ और geometrical center भी एक है. So total हो गए n is equal to 2. So 2 raised to 2, again it is 4. कौन से आ सकते हैं? तो यहां आ सकता है R और S और यहां आ सकता है E और Z. ओके, अगर कॉम्बिनेशन लिखेंगे सो R E, देन R Z, S E और S Z. So total number of stereoisomer when a molecule contain both optical and geometrical center, then also we use the same formula, that is 2 raised to n. So this formula is used to calculate constitutionally unsymmetrical molecule. और इसमें सबसे important point है that all those structures or all those stereoisomers are optical active in nature. So in a constitutionally unsymmetrical molecule, all stereoisomers are optical active. So चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, that is the constitutionally symmetrical molecule. So how can we calculate the stereoisomers when molecule is symmetric in nature? So what are constitutionally symmetrical molecule? अगर कोई भी molecule हम किसी भी साइड से अगर उसको नंबरिंग देंगे, अगर वो नंबरिंग सेम है, उसके constituent सेम है, so that molecule is called as constitutionally symmetrical molecule. एग्जाम्पल देखिए. So this molecule is constitutionally symmetrical molecule. अगर हम नंबरिंग देंगे यहां से 1 2 3 4. ओके, सो ये कायरल सेंटर देखेंगे, इसको अटैच है OH, H, CO2H एंड HOH, CO2H, ये फोर्थ ग्रुप है. और अगर ये कायरल सेंटर देखेंगे तो उसको भी HOH, COOH एंड HOH, CO2H, ये वाला ग्रुप है. So this molecule is constitutionally symmetrical molecule. Okay, so when a molecule is constitutionally symmetrical, then we use this formula to calculate the total number of isomers. So when chiral center or geometrical centers are even number, then we use the formula, that is the 2 raised to n minus 1 plus 2 raised to n by 2 minus 1. Okay, so formula है, that is the 2 raised to n minus 1 plus 2 raised to n by 2 minus 1. Okay, so in this case chiral centers are 1 and 2, so n is equal to 2 for this molecule. This molecule contain even number of centers, whether that is geometrical centers or optical centers. Okay, so this 2 raised to n minus 1 indicates that those molecules are optical active, and this part indicates that those molecules are optically inactive.
तो चलिए कैलकुलेट करते हैं. सो इन दिस केस n इज इक्वल टू 2. सो पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, दैट इज द 2 रेस टू 2 माइनस 1 एंड प्लस 2 रेस टू 2 divided by 2 minus 1. So 2 raised to 1 plus 2 raised to 2 divided by 2, that is 1, 1 minus 1, that is 0. Okay, so it becomes 2 plus 1. So total number of stereoisomers are 3. So out of that 3, 2 isomers are optically active. And this one number indicates that this one is a meso structure. आप वीडियो पॉज कीजिए और देखिए ये मेसो स्ट्रक्चर्स कैसे आते हैं, इसके कॉन्फ़िगरेशंस कौन कौन सी है. सो फॉर दिस मॉलिक्यूल टोटल नंबर ऑफ स्टेरियोइसोमर्स आर 3 एंड आउट ऑफ दैट 3, 2 आर ऑप्टिकल एक्टिव एंड 1 इज ऑप्टिकल इनएक्टिव, दैट इज द मेसोफॉर्म. So this is all about the constitutionally symmetrical molecule with even number of chiral centers or geometrical centers. So this formula is used to calculate the total number of stereoisomers. So next point in constitutionally symmetrical molecule, that when odd number of centers, that is optical center or geometrical centers are present in molecule, so we use this formula, that is to calculate the total number of isomers, that is 2 raised to n minus 1. Okay, and again, if we have to calculate the optically active isomers, then we use formula, that is the extended formula, that is 2 raised to n minus 1, that is the total isomers, minus 2 raised to n minus 1 divided by 2. That number indicates that, or that formula is used for the calculation of the meso. Okay, so total minus optical inactive means automatically we say that molecules are, or those molecules are optical active. Okay, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. तो चलिए आप कैलकुलेट करके देखिए, कमेंट कीजिए हाउ मेनी स्टेरियोइसोमर्स आर प्रेजेंट फॉर दिस मॉलिक्यूल. आउट ऑफ दैट स्टेरियोइसोमर्स ऑप्टिकल एक्टिव कितने और ऑप्टिकल इनएक्टिव, दैट इज मेसो कंपाउंड्स कितने. तो चलिए वीडियो पॉज कीजिए और आप कैलकुलेट करके देखिए. So what is the formula, that is the 2 raised to n minus 1. So n means number of chiral centers or number of optical centers or geometrical centers. So यहाँ 1, 2 and 3 chiral centers है. So n कितना आएगा, that is the 3 and the formula is 2 raised to n minus 1. Okay, so 2 raised to 3 minus 1, so 2 raised to 2, that is 4. So इसके जो स्टेरियोइसोमर्स आएंगे, that is total number is 4. Okay, then optical active कितने आएंगे. So if we calculate the mesoform, we automatically subtract that mesoform from these total number of isomers, we get optical active. Okay, so meso के लिए क्या फॉर्मूला है, that is the 2 raised to n minus 1 divided by 2. Okay, so n means 3, so 2 raised to 3 minus 1 divided by 2. So 2 raised to 2 divided by 2, that is 2 raised to 1. So automatically we say that 2. So 2 are the mesoform. Total number of isomers are 4. So 4 minus 2. So 2 are optical active. Total isomers are 4 and remaining 2 are optically inactive. Optically inactive, that is the mesoform. Okay, so for this molecule total number of isomers are 4. Out of that 4, 2 isomers are optically inactive, that is meso, and we directly say that if 2 isomers are optically inactive, so 4 minus optical inactive means automatically optical active. So this is all about the constitutionally symmetrical molecule when even number of chiral centers are present and when odd number of chiral centers are present. Always use those formulas to calculate the number of stereoisomers. तो चलिए आखिरी पॉइंट देखते हैं, that is the bonus point for today's video. Next point, that is the bonus point, that is again from constitutionally symmetrical molecule, but in this case optical and geometrical centers are present in a similar molecule. So molecule is constitutionally symmetrical and it contains odd number of centers, whether it is optical or geometrical. Okay, so if we calculate why it is called as constitutionally symmetrical, अगर हम यहाँ से calculate करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so molecule same ही है.
अगर यहां से भी कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, सो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर सेम, कहां से भी कैलकुलेट कीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट सेम ही है. Okay, so that's why it is called as constitutionally symmetrical molecule. So when optical center is present at the middle position, so to calculate this number of stereoisomer, we use again same formula, that is 2 raised to n minus 1 when optical center is present at the middle. Okay, so formula is 2 raised to n minus 1. So n, that is the number of centers, that is optical center plus geometrical center. So this one is an one geometrical center, again this one is an geometrical center, so two centers आ गए, so n यहाँ 2 आ गया. और this is an chiral carbon atom. Okay, ये मत भूलिए, ये chiral carbon है. So total number of centers are 3, so n is equal to कितना आया 3. So put that value, so 2 raised to 3 minus 1, so that is 2 raised to 2. सो आंसर आ गया 4. सो 4 आंसर आ गया, लेकिन उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या हो सकती है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज. सो ये E और Z आ सकता है, ये R और S भी आ सकता है, और ये भी E और Z आ सकता है. सो अगर हम पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे, सो ये आ सकता है E R E, Z R E, देन Z R Z, देन E R Z, same E S E, then Z S E, then Z S Z, and then E S Z. So आपको क्या लगता है, हमने तो कैलकुलेट किए 4, लेकिन आ रहे 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Okay, so is this right answer, that is total number of isomers are 4. So चलिए देखते हैं कैसे आ सकते हैं. सो देखिए, अगर इस साइड में E आइसोमर है, यहां भी E आइसोमर है, सो इट मींस दिस टू साइड्स आर इक्वल, सो ये कायरल सेंटर कैंसल आउट हो जाएगा. ओके, अगर यहां Z है, यहां भी Z है, सो ये कायरल सेंटर भी कट आउट हो जाएगा. मींस दिस R एंड दिस S इज नथिंग बट EE एंड EE, मींस ये एक ही मॉलिक्यूल है. ओके, so this one and this one are same, so ये first हो गया stereoisomer. then again in the same case of ZZ, so अगर ये ZZ है तो ये हो गया optical inactive part, ये भी ZZ है, so ये भी हो गया optical inactive part. so इसके लिए ये दोनों भी same है, so ये आ गया second. अगर आप देखेंगे मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है, यहां से कैलकुलेट कीजिए, अगर यहां से फर्स्ट Z आता है, ओके, यहां E आता है, और यहां से अगर कैलकुलेट करते हैं यहां Z आता है और यहां E आता है, तो देखिए ZRE इज नथिंग बट ERZ. आप ही सोचिए, अगर यहां Z है, यहां E है, ओके, और दूसरा हमने लिखा है E और Z, सो बोथ आर सेम बिकॉज एंड्स आर सेम. सो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, इसका एक कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा, दैट इज 3. एंड इन अ सेम केस दैट इज फॉर दिस मॉलिक्यूल, सो यहां आएगा, ये आएगा फोर्थ वन. ओके, सो 1 2 3 एंड 4. अगर ये E और E आता है तो मिडल का कायरल सेंटर नहीं रहेगा, वो अकायरल हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज टू पार्ट्स आर इक्वल. So automatically we say that what is a chiral carbon atom? If a molecule contain two similar atoms, okay, or similar configuration components, we say that that molecule is achiral. अगर यहाँ भी ये, यहाँ भी ये, means ये cancel out हो जाएगा. यहाँ भी ये, यहाँ भी ये, means ये S ही नहीं रहेगा. तो E E E E both are same. In again case Z and Z, so Z and Z means again same. So ये आएगा number 1, ये आएगा number 2. Okay, and ZRE is nothing but ERZ, वो आएगा थर्ड नंबर. and ZSE is nothing but EZS because molecule is constitutionally symmetrical. So total number of isomers calculated, that is 4. आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको ये आ सकता है. So the last point of today's video, that is the geometrical center at middle. If constitutional symmetrical molecule is present and that molecule has odd number of centers and the geometrical center is present at the middle, at that time we use this formula to calculate the total number of isomers. That is, the total number of isomers is equal to 2 raised to n minus 1 plus 2 raised to n minus 1 divided by 2. Okay, so in this case this is an of one number, second. So 3 geometrical centers are present and geometrical center is present at the
middle. Okay, so n is equal to 3 in this case. So how can we calculate it? That is 2 raised to 3 minus 1 plus 2 raised to 3 minus 1 divided by 2. So 2 raised to 2 plus 2 raised to 3 minus 1, that is 2, 2 divided by 2. So 2 raised to 2, that is the 4, and 2 divided by 2, that is 1. So 2 raised to 1, that is 2. So total number of stereoisomers are 6. Okay, so for this molecule total number of stereoisomers are 6. So where that is EZ और EZ. तो चलिए कमेंट कीजिए और आंसर बताइए ये 6 आइसोमर्स कौन से होंगे, उनकी कॉम्बिनेशन कौन सी होगी. सो दिस इज एन होमवर्क फॉर यू. सो इन 4 मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स बाय यूजिंग दोस फॉर्मूलाज कैलकुलेट कीजिए और जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए. अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.